Hare. Chaitanya Charitamritam Madhya Leela. Reading from Chaitanya Charitamrita Madhyam Leela, Slok 24. Or chapter 19. Chaitanya Mahaprabhu is giving Shiksha to Sri Rupa Goswami in Prayag. Krishnadas Goswami Prabhu is saying, Bhakti Lata Bij Sravana Kirtana Jari Kara Sichan Upajya Varilata Brahmanda Virijay Viraja Brahmarug Vedi Parabhom Pai Pavijay Tadupari Guru Vrindavan Krishna Charan Karuviche Karyaruhan Taha Vistariya Hoya Fale Prema Phal Mali Huya Seche Sravana Kirtana Dijal Yamali Seche Sravana Kirtana Dijal Yadi Vaishnava Aparad Ute Hati Mata Upariva Chindi Jai Suti Jai Pata Tabe Mali Jatna Kari Karyavaran Aparad Hasti Yuchi Nahai Udgan Kintu Jadi Latar Sangi Uti Upasakha Bhukti Mukti Vanchajata Sankatar Legham Nishitrachar Kutinati Jilhing Son La Puja Pratishtha Dijato Upasakhagan Sek Jol Paya Upasakha Badi Jai Sabda Yamul Sakha Badi Tena Pai Pratame Upasakar Karo Chedan Tavi Mul Sakha Badi Jai Vrindavan Prem Phal Paki Padi Mali Asadai Tavi Lata Avalambhi Mali Kalpaviksha Pai তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করই সেবন সুখে প্রেম ফলরস করে আস্বাদন এই তো পরম ফল পরম পুরুষার্থ তার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ Chaitanya Mahaprabhu is saying, in this universe, people going around and only with the Guru and Kripa, they find Bhakti Lata Bij. What is Bhakti Lata Bij? It's Shraddha. And Krishna Seva Vasana. This is Bhakti Lata Bij. Krishna Seva Vasana. Sravana Kirtan Jai. Sravan Kirtan, which is watering the seed that we have obtained. And who is Sadhak? Sadhak is the gardener. After taking from Guru, we obtain the seed of bhakti. We have to seed. After getting the seed, we have to water that seed with Sravan Kirtan. But when we get the seed, if we don't put it in the soil, and if we don't give water on a regular basis, that seed will not germinate. So, the sadhak, when he gets the bij, he has to, like a gardener, maintain
So पानी दे Krishna Seva Vasana बस is the श्रवण beach, कीर्तन means the seed. We have to इस water प्रकार this श्रवण with कीर्तन Sarvan की जल Kirtan. सिंचन करने पर By doing this, धीरे धीरे slowly, वो लता the, बढ़ती the, that seed will germinate फिर लता into बढ़ते a बढ़ते कहाँ small जाएगी kripa. That उपजिया kripa, बाड़ी लता उपजिया बाड़ी लता that ब्रह्मांड में kripa will grow लता right up to ग्रो होती Brahma. है Brahman. और बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी विरजा पार करके Cross the ब्रह्मांड को भेद करके pass the Viraja River and pass this ब्रह्मांड में Brahman. अष्ट द्वार द्वार There is ये eight अष्ट द्वार की भेद कर दिया eight अष्ट doors. मन When we are आठ crossing the द्वार Brahman, है इसलिए भेद कर दिया we have to cross these walls. अष्ट So this द्वार क्या है Bhakti Lata Bij will cross the eight doors. What are these eight doors? गीता में तो बताएंगे It is said in Gita. ये जो अष्ट द्वार So the eight doors, आठ द्वार को भेद कर दिया eight walls that needs to be crossed after crossing पंच over the इंद्रिय Brahman. आदि के जो The five और Indriyas, मन बुद्धि Man, Buddhi and Anankar. These are the eight walls. इसलिए अष्ट द्वार की भेद करके Yeah. फिर The Bhakti Lata Bij will विरजा break these eight है walls and go past विरजा लोग को पार करके Viraja River. फिर ब्रह्म ज्योति धाम Then we'll go to Brahma Jyoti Dham. ब्रह्म ज्योति धाम गीता में Then says that in Gita also, और ब्रह्म ज्योति धाम के पार करके फिर after crossing Brahma Jyoti Dham, then और वैकुंठ से ही we will go अयोध्या pass to Vaikunda and then pass to मथुरा और मथुरा धाम को प्राप्त करके फिर pass Dwarka, Mathura, and then passing that, then you go to Golok. वृंदावन Of Golok is Vrindavan. विरजा ब्रह्म लोग वेरी परम बोम पाए तभी जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन So this is what the slok is saying. It has to go past all this and go up to Golok Vrindavan. ये गोलोक की कहा जाता है वृंदावन की परीक्षा का परीक्षा माने द्वार Golok is और घर के it's चारों called तरफ as the walls surrounding the Vrindavan. This is called as इसी Golok. प्रकार गोलोक Golok is referred as the walls, Vrindavan in the middle. वृंदावन जो स्थान है वो कलिंग का कोलिका है कमल के Vrindavan is like सभी the अंतर में middle जो of the big lotus flower, right in the center, is where Krishna resides. This is the Vrindavan Dham. और वहीं पर जाकर के कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष में वो आरोहण करते And this is when the Kripa will go right up to Krishna's lotus feet. कहाँ विस्तार है ना अनेक दिनों पर वहीं पर वह लता भक्ति लता बीज Bhakti Lata Bij will, after germinating, will go up to the Golok Vrindavan. कृष्ण प्रेम रूपी फल वहीं पर लग जाए Then over there, the Krishna Prem ये वहीं पर fruit will germinate there. कई शाखाएं हो जाता है जैसे Will also लोगी की referred some. After going to Golok Vrindavan, there will be a lot of other branches that will grow from there. Go, just like सब ब्रांचेस the sub branches that सारे will. सब ब्रांच के छोट काटना पड़ता है Then we have to cut all the sub branches. ठीक उसी प्रकार गोलोक के पहुंच जाते हैं वहीं पर भी Yes, similarly, we have to go up to Golok Vrindavan, and there is one main branch, and there is some other branches that will come coming out. उपशाखा
जैसे सखी नित्य सखी प्राण सखी So कृष्ण they are प्राण like कृष्ण Sakis, Nitya Sakhi, सबको क्या Pran करें Sakhi. प्रेम करना Then तब this, ये भी करना so this we है have to trim all of those out, एक को रखना and we have to keep one. है वो कौन सा किसको करना पहले तो पांच प्रकार के दास संत दास सबको बात First we have to पांच में एक रस को one ras we have to क्या बोला obtain. माधुर्य We have to accept Madhurya ras. माधुर्य भी उसमें दो शाखा निकल जाता है Then also after Madhurya there are है two सख्या branches, पर क्या in बोले Sakhya and Parikya. वहाँ पर सत्य को काट करके And फिर माधुर्य Sakhya, के लिए Sakhya needs to be माधुर्य में वहाँ पर भी trimmed पांच off, शाखा निकल and जाता then है Parikya. संत दास सबको वात्सल्य माधुर्य And then in और Madhurya also उतने there are माधुर्य five में branches. राधा जी की दो शाखा निकल जाते हैं Then you have to be two. राधा चंद्रावली की राधा की Then चंद्रावली after के that there will साथ be में काट दिया two branches come out, फिर Chandravali and उसमें Radhika, राधा and इसमें one माधुर्य again इसमें has to be trimmed फिर off. पांच निकल Chandravali has to be trimmed सखी off, नित्य सखी and प्राण then सखी प्राण Radhika सखी branch will be there, सखी और नित्य सखी and को रख over करके there also five branches will come out. बाकी सबको छाटना पड़ेगा Sakhi, कोई Asta Sakhi, Prans Priya Sakhi. So अर्थात we have to, कौन रहेगा so एकमात्र at the end मंदिर only one Manjari Bhav needs to stay, and all other sub branches needs to be trimmed off. और नित्य प्रत्यह साधक आदि कहाँ पर है Sadhak, where is the sadhak? Sadhak is in the material world at the moment. साधक अभी यहाँ पर भजन करे और He is ये doing चलाते bhajan. कहाँ Where does he, लता कहाँ Lata? पहुँच गई The Lata has gone up to गोलोक वृंदावन Golok Vrindavan. The sadhak is doing bhajan here, but the किंतु Lata यहाँ पर has. क्या देना पड़ेगा हर रोज But what we have to do here, we have to give water every day. जैसे लता के मूल में यदि पानी नहीं दिया जाए वो लता सूख जाती Because if you don't water this, श्रवण कीर्तन जल ही करो if you don't श्रवण water कीर्तन में it, भी जल this branch will, this lata will वो भाव को dry up. प्राप्ति करने के लिए So we have to continuously उसी give प्रकार Sarvan भक्त की Kirtan. संग आदि से वो वह कथा आदि श्रवण करना So we have to, Sarvan Kirtan means we have to associate with जो this, भाव आपको प्राप्ति करना which है bhav you want to ये शास्त्र get, हो obtain. शास्त्र सबको You बात have श्रवण to करना accordingly listen to जो the भाव Hari आपको Katha. प्राप्ति करना है उस कथा को आपको श्रवण So we have to करना listen to Hari Katha जैसे आपको according to the मंजरी भाव mood that we प्राप्त have to करना है obtain. We need to obtain तब Manjari Bhav. उसी So प्रकार we have मंजरी to, भाव संपन्न similarly, we have to listen to Hari Katha, Vaishnavas, from the Vaishnavas who, who are in the same line. एक साधारण रूप में So देखा you cannot just listen to anybody. And, साधु संग yeah. किंतु साधु कौन सा Ordinarily साधु we की संग said we do sadhu sang, but which sadhu? So we have to समान associate with वासना sadhu रुचि से who is in साधु this, संग करना the lineage of our mood, पहले उनसे वो समस्त our end आदि goal. कीर्तन श्रवण So we have to listen to the sadhu and एक then साधारण विचार और एक do. विषय विचार साधारण विचार सब लोग के लिए कहा जाता है So one is sadhana vichar, sadhana पहले vichar, the साधु संग standard करो standard कौन सा साधु संग view, which is do sadhu sang. But then there is a special, मैंने सब साधु के संग which गधे type of कोई sadhu? करते ये साधारण विचार This is the standard, सबसे सुनो just a standard सबसे view सुनो that is listen to everybody. इस कान से सबसे सुनो इस कान से सबसे सुनो Listen to with one कान है ear. भगवान ने कान दिया सबसे सुनो This will, this is this just a standard view. निष्ठा आदि होते But आगे as the मान your nishta, your faith increases, एक ही सुनो then you have to listen to one, हाँ सुनो and किसके सुनो the one एक से who सुनो पहले हाँ सुनो एक कौन है one is this. Who is this one? Who is this Rasik Bhakt? Who is the same lineage, same mood that you want to उस obtain? रस विषय कथा वो Which ras संग
which rasa you want to obtain, which is your end goal. You must be able to, you need to associate with that sadhu or Vaishnava. If you want to do Gopi Bhav, then we cannot just go anywhere and listen to any sadhu. You have to listen to those particular Vaishnavas who will give you that bhav. Sarvan Kirtan have to be done every day. The example, if you want to get Vatsalya Bhav, then similarly you have to be in the assist Ma Yasoda and do the, you have to do kirtan and meditate on the, then you have to listen to Balila Katha from a sadhu who is in that mood. And if you want to do Sakhya Bhav, then you have to listen to sadhu who is on a Sakhya Bhav platform. And if you want to do Madhurya Bhav, the Singar Ras, then you have to listen to a sadhu who is in that mood, who is himself in that mood, and then you will be able to listen to in the similar mood. Somebody wants to entry into the Samrupi Singar Ras, then you have to follow 3 steps. Vrindavan, 3 to stay in Vrindavan Dham and do and associate with sadhu. But, but if you don't want to obtain any particular goal, then they will do every Devi in Devtas, then you won't be able to obtain. Because if you go to Hindu mandirs, then you have all the deities. If you have all the Devi Devtas in your house, even if you get a stone, even if you find a shiny stone on the road, just they pick that up and put them on altar also. Mm. So the view is that they don't want to offend anybody. But if you want to do good proper bhajan, you need to have nishtha, one-pointed bhajan. You have to be in that particular mood. So you need to be in association with Manjari Bhav, and you have to go to sadhus who are in this Manjari Bhav and listen to sadhus who are in this particular bhav and do bhajan sadhan. But if there is a Vaishnava aparad, Vaishnava aparad is like a mad elephant. Mad elephant. It will destroy your bhakti lata plant. Your kripa can be destroyed. इसलिए क्या है ना वैष्णव अपराध छोड़ करके हमें भजन करना
So we have to leave the aparad and then do bhajan. So we have to be very careful not to cross जब तक Vaishnava हम aparad. अपराध करते रहे वैष्णव करते Until रहे, we हमारे are पास doing a नहीं है। Vaishnava aparad and doing Harinam ये also, अपराध विचार करके that will not bear any fruits. So we have to leave aparad and keep लेकिन ऊपर एक बात चली doing बात our सुन जाए sadhans, पता जिस प्रकार sadhana. समस्त वस्तु पगला हती बगीचा में प्रवेश करके ये, और वो पौधा की जो है जड़ So समेत this खाद में Vaishnava चले aparad is like the mad ठीक elephant. It इसी will प्रकार enter वैष्णव the garden, अपराध रूप से and this Bhakti बगीचा Lata को खाते beej चले and the kripa he will destroy. इसलिए ताते माली जत्न करी करे आवरण So से as the माली माने gardener, साधक अपना gardener प्रयत्न who से is जत्न who is करे the sadhak, वो he will पूरी try की to चारी protect. तरफ He'll make fence the kripa, protect it, रक्षा करना पड़ता to protect it. किंतु शुद्ध भक्ति के साथ जब ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि है उपसखा But with Suddha Bhakti, वो आकर के भी there is a मूल सखा को क्या कर देते हैं love. If there is pratiksha, pratiksha comes in, then the main root of the kripa can be destroyed. अनेक प्रकार की जो संसार वासना रहे If तो भक्ति देवी ढक जाती there is a lot of material desires, then Bhakti Devi will dry up, will be covered. Bhakti Devi will be covered. ये भक्ति मुक्ति Bhakti and Mukti have to be भक्ति माने renounced. तो समझ में आता है कि मुक्ति माने लिबरेशन भक्ति क्या है Desires, material desires. सेंस ग्रेटिफिकेशन Bhakti and Mukti. आज Mukti is धर्म अर्थ liberation, काम and इसके कार्य self gratification needs to be धर्म ये सब भक्ति मुक्ति है मुक्ति आज जैसे पंचम एक तो फिर कहते हैं चतुर्वर्ग मुक्ति में आ जाते और पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है संसार की so भक्ति वासना जब तक until we have the तब तक मैं desires for enjoying the material world, and then we cannot obtain Krishna Prem, cannot be obtained भक्ति सुखस्तत्रम कथो अबुद्धयो until the desire of Bhakti and भक्ति Mukti. मुक्ति की स्प्रिया स्प्रिया माने इच्छा Priya means intention. Until we have the desire, this desire in our heart, ये पिशाचिनी के बात it's like a witch. इसके साथ तुलना दे रहे हैं पिशाचिनी It's like a witch. विच ये जब तक हमारे हृदय में रहेगा Until this is in our hearts, we will not be able to progress. तावत् भक्ति सुख सत्रम कथम अबुद्धयो संसार की वासना नहीं रहने पर Only when we don't have any desires for the enjoyment of the material world, मुक्ति के वासना then भी only नहीं then, और सूक्ष्म क्या वस्तु and रहता है then we'll just be staying with it. ये लाभ या प्रतिष्ठा And then even more subtle is the pratishtha, labh, pratishtha, even that is which is very hard to get rid of. ये शुद्ध भक्ति होइते हाँ किंतु लदा समय ये सब क्या करना पड़ेगा सब दूर करना पड़ेगा So we have to remove all these desires, and then लाभ पूजा प्रतिष्ठा labh, puja and pratishtha has to be लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि सब क्या है removed. उपसर्ग के बारे में बताया They are just like, they are और like, उपसर्ग आकर के मूल सका में क्या yes, they are like the weeds that are growing with our bhakti lata bij, bhakti lata plant. And what will they do? They'll cover the main kripa.
Bhakti Lata Bij ka Prabha and destroy it. शास्त्र में जो विधि विधान दिया गया था Like in Shastras, whatever rules and regulations are given in the Shastra need to be followed. ये कार्य करना है कार्य नहीं करना तो What सब needs to be done and what शुद्ध shouldn't be सदाचार done. पालन नहीं करे तो So भगवत if we can't provide Suddha Sadakar, शुद्ध सदाचार means पहले we have to be पालन करना चाहिए the rules and regulations of जितने भी वैष्णव सदाचार हैं भोजन के बाद हाथ धोना चाहिए मुंह धोना चाहिए like बाहर से आकर के clean, पैर धोना like चाहिए cleaning yourself before मल में आप पैर लगा करके आए coming when you're coming back home from the from outside. You stepped in so many different places, so when you come home you like to wash your feet before you enter the Thakurji's mandir. Wash your hands after eating, wash your hands and mouth. So the all this vidhi mark has to be followed for for doing seva. So, करने के बाद सब धोना पड़ता है so after going to the toilet, you need to wash yourself. These are all vidhi mark that needs to be followed. कपड़े में आप पायखाना में जाते उस कपड़े को ठाकुर जी के कंठ ठाकुर जी से बांधना The clothes that you go to toilet with, you can, सामने सुनो वो सुन करके सुन लो पालन नहीं करो तो हम जितना कर लो एक दिन आएगा करने धोती पहना आता है कि धोती है आपको धोती है धोती लीजिए जब ठाकुर जी का आरती करोगे ना तो ये धोती कर ये सूट पंजाबी कर पहने देता ये तो विदेशी वो सब चार्ज में जाते हैं ना so when you are doing service to the deities, you need to wear dhoti and not pants and shirts. Those. So we have to follow this Suddha Sadachar. Otherwise the Lord will not accept our offerings and our seva. We need to be clean. और धोती पहन लिया पहन के ठाकुर जी डाल दी अच्छा रहेगा We need to become a true Hindu, and we cannot be like Christians going to the church with shirt and pants. We need to have our tilaks on. We have to be keep all these rules and regulations so that the Bhagwan will accept our services. Otherwise, Bhagwan will not accept our services if we are not following these rules and regulations. We have to listen to all these rules. Bhakti is regarded as easy, at the same time very durlabha, means very rare. So even if you have to do so many lifetimes to get this bhakti, so something which is very rare, we have to sacrifice so many things. So this is so rare. So we have to obtain Krishna Prem, and this is not easy to obtain. And even then we have to not only obtain Krishna Prem, but also Prem, Radha Prem. So we have to obtain this, we have to follow so many rules and regulations. So whatever has been
Kutinati means Kutinati. Kutinati. Ku মানে খারাপ, নাট Ku, মানে ku যেসব means গুণে bad, খারাপ, and Nati means নিষেধ জারি, which is been forbidden. forbidden by the Shastra. वो आपको लेना पड़ेगा। So you have to accept that. जैसे अभी चातुर्मास चल If, रहा for example, if the चातुर्मास में Chaturmas is going on, विधि दिया गया, so there is some rules regarding Chaturmas. बेगुन खाना नहीं So चाहिए, not to eat लौकी खाना नहीं चाहिए, eggplant, lauki. खाने की भी विधान दिए। So we have और to, फिर what 4 to eat, महीने what में not to श्रावण eat. महीने में In Savan Maina, साग खाना नहीं चाहिए, we shouldn't be eating saag, श्रावण में खाएंगे। no spinach. श्रावण So those are श्रावण भाद्र मास the में rules of the Shastra दही which लेना नहीं needs चाहिए। to be followed. आश्विन महीने में दूध पीना मना है, अभी आश्विन मास चल रहा है। कार्तिक महीने में क्या लेना है, क्या माना In है, Kartik, सरसों तेल, sarso is सरसों सरसों तेल not allowed. है, ये All this needs to be followed हर because these are what have been इसलिए forbidden in शास्त्रों the में Shastra. विधान दिया गया, So whatever vidhan, whatever rules been given in the Shastra, we have to follow. इसे कुटी नाटी Kuti nati है, means को माने खराब, ku means bad. जो निषेध जारी है। Nati means the one which has been forbidden by the Shastra. इसलिए निषिद्धाचार कोटि नाटी जीव हिंसन, जीव हिंसन Jeev hinsa means त्याग देना, to प्राणियों की हत्या करना जीव हिंसन का है। Jeev hinsa means मतलब भक्ति सिद्धांत से जो प्रपात करते हैं, जीव हिंसन क्या है, हरि कथा नहीं बोलना जीव हिंसन Bhakti. Saraswati Thakur Prabhupada has said that what is Jiva Hinsa? है। Not to speak Harikatha is Jiva शुद्ध Hinsa. हरि कथा नहीं बोलना Yes, ये not to speak the true वो भी आत्मा Harikatha. के ऊपर सत्ता बोलता है, So आत्मा के this is, ऊपर मन के ऊपर so we are, if है। मुझसे तो खाना है, आत्मा को देना। so we have to feed, आत्मा की भोजन क्या है, we need to feed the Atma. You know, what is Atma's food is Harikatha. इसलिए आत्मा So के not, भोजन नहीं देना ये if क्या हो गया, not giving food to Atma is also a hinsa, means स्वास्थ्य देना तो हिंसा, giving, मारना काटना ये हिंसा हो गई। will be killing our उसी Atma प्रकार or killing other Atmas. शरीर में जो आत्मा जीवात्मा है, So which, उनके भोजन नहीं देना वो जीव हिंसन। so if you're not giving Harikatha to the, शुद्ध वो भी हरि कथा भी शुद्ध हरि कथा so, नहीं बोलना वो भी जीव हिंसन है। so this is regarded as Jiv Hinsa. जो एडवांस डिवोटी है, उनके So, निकट एडवांस से नहीं, भगवान की विद्यार्थी विद्यार्थी कथा बोल जो कथा आदि कीर्तन करना, संस्कृत आत्मा सा है। भजन so करते those who are advanced devotees, they need to get Harikatha. स्तर की कथाओं के श्रवण के लिए इच्छा है। So तो ये the इच्छा more कहाँ से advanced होगी? you आत्मा are, की। it will, this desire will come to listen to more higher level of Harikatha. And where is it coming from? This is coming from your Atma. वो क्या करेगा? So this needs to be मंदिर भाव fulfilled. This, the Atma needs to be fed. मंदिर भाव की कथा श्रवण करेगा। So if you are in a line of Manjari Bhav, you are trying to इसी obtain के Manjari तत्व Bhav, then you have to प्रभाव तत्व का listen to that sort of Katha. If you are in Dasya Bhav, then you have to listen to those Katha of Dasya Bhav. Or जो Mother. जिस रस के भक्त So होगा, whoever category of devotees they are, then they need to follow that particular bhav मुक्ति मुक्ति and listen to Katha accordingly. या बदल साचे निधि वर्तते तावत भक्ति कर्तव्य कथम भक्ति मुक्ति स्प्रिया जब तक हृदय में रहेगा, Until there is bhakti and mukti in the hearts, until then Sudha Bhakti is very hard to obtain. धर्म प्रचित कोई तो वस्त्र परमणि मत्सना In Bhagavad also, in the third slok, it's also said, श्रीमद् भागवतम महामुनि किंबा परेश्वर श्रद्धो हृद श्रद्धो हृद पृथ्वी सुश्रुवी
कथा श्रवण के लिए कहा गया है। You have to श्रीमद् listen भागवत to में ईश्वर katha. के द्वारा क्या बताया? What is धर्म this बुद्धि slok? कोइतव, कोइतव माने This slok is कपट, emphasizing to listening to katha. कपट धर्म के श्रीमद् भागवत किसी प्रकार अनुमोदन नहीं कर रहे। So धर्म the बुद्धि false कोइतव, dharma is been rejected by Bhagavatam. This, इसके कपट धर्म, हमारी this कपटता क्या है? kapat, जीव की सबसे बड़ी कपटता क्या है? what kapat dharma is, सबसे the बड़ी biggest कपटता kapat is that we trying to, the liberation, the desire for liberation is the biggest kapat, biggest fault. And until that is completely removed from our hearts, then only we have this has to be this this desire needs to be removed completely. This is referred to as witch. The desire, the desire, which is the desire of is regarded as the witch. Until we have removed the desire of bhukti and mukti, then until then bhakti cannot manifest. If somebody wants to obtain prem, Krishna prem, then you have to remove completely bhakti, mukti has to be completely removed. निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसा, जीव हिंसा दो अर्थ बताए। What is jiv hinsa? There are two meanings given. Giving others miseries, that's and to physically harming any other living entities is one jiva hinsa, and the second one is not giving the proper or good the right harikatha to the jiva is also regarded as jiva hatya. So these are the two types of jiva hatya. समस्त प्रकार उपाधि से मुक्त भक्ति शुद्ध भक्ति से उपाधि से मुक्त होना पड़ेगा। We have to be liberated from all the different types of designations we have carry with us. I am rich, I am poor, I am smart, I am graduate, I am pandit. All these titles has to be removed. तो इसे कह रहे हैं सेक जल पाया लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि इसे कहते उपसका के साथ तुलना है। So all this is the extra weeds that are growing with our bhakti lata beads. Those needs to be uprooted. उसी प्रकार साधक के हृदय में जब तक भक्ति मुक्ति स्प्रिया लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि है तब तक प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं। Until those desires are in our heart, prema bhakti will not manifest. The bhakti devi will be covered by all the weeds. First to do is to cut the branches of the upasaka. Upasaka is from the meaning the bhakti lata, kripa. And where is this fruit growing? It's in Golok Vrindavan. When we are doing Sarvan Kirtan, we are giving water. And if your bhakti lata which is have gone up to Golok Vrindavan, then that fruit is germinates right in Golok Vrindavan and ripes there. And after ripening there, where it's going to come down here to this material where, and then this gardener will be able to
enjoy that prem phal. সেই পরম ফল সেই পরম ফল পরম পুরুষার্থ তার আগে তিনি তুল্য চারি পুরুষার্থ প্রেম ফল তো ফল জানা When the prem phal is ripe, that fruit is ripe, then how will you get this prem phal? From our Guru Parampara. লতা অবলম্বী মালিক কল্পবৃক্ষ পায় সেই কল্পবৃক্ষের করে হিসেবে অসেজন সুখে প্রেম ফল রস করি আস্বাদন মালিক The gardener, what he's doing, then he receives that prem phal, and then he enjoys that prem phal. The sadhak will enjoy this prem. এই তো পরম ফল পুরুষ পরম পুরুষার্থ যার আগে তিন তুল্য চারি পুরুষার্থ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ Dharma, Artha, Kam and Moksha, the four platforms, there needs to be given up only the fifth, the prem. The Krishna prem needs to be enhanced. What does the gardener do when the fruit is ripe? He enjoys that fruit. आदि प्रेमेर देश द्वारा अंधकार के अधिक न सुबुद्ध समृद्ध सारी रिद्धि समय श्रेष्ठता सत्य धर्म मूलक नियोजन उत्कृष्ट ब्रह्मानंद निज निज चारित्रिक जीवन की चमत्कृत कर यहाँ पर वर्णन हो रहा है जब तक हमारे हृदय में रिद्धि सिद्धि ये सब की इच्छा रहेगी. When we have desires in our heart of Riddhi, Siddhi, we have to show some miracles in front of other people. What is this? This is all for Labh Pratishtha. And then people will run, so that people will follow you, people will run after you. These desires is Pratishtha. Then this has to be given up. शुद्ध भक्ति হইতে হয় প্রেম উৎপন্ন অতি শুদ্ধ ভক্তির কহি লক্ষণ শুদ্ধ ভক্তি অনুসরণ Suddha Bhakti, when we are following Suddha Bhakti, then only the prem will appear in our hearts. কৃষ্ণ সেবা কি বিরোধী অবৈধ যদুসঙ্গ আদি दुर्नीतिमूलक समस्त प्रकार की मुमुक्षु और बुभुक्ष मुक्ति की इच्छा करे इसी कार्य मुमुक्षु कार्य They have desire for mukti. भोग की इच्छा जो करते उसी कार्य है मुमुक्षु कार्य. And if your desires to enjoy the material things in this material world, they needs to be taken off. You cannot have anything. Only the desire is to be complete surrender to Govinda. Until we have complete surrender to the Govind, Bhagwan, Govind. Until those desires are there, we cannot be bhakti, prem bhakti will not appear. All this bhog ichha is like getting good house, getting good bed to sleep on, get good prasadam to eat. All these desires are
regarded as bhakti. एकांतिक की भक्ति योग नहीं भगवान नहीं देते, Until there is one pointed, पहली भक्ति मुक्ति देकर उनको वंचित कर देता until the मुक्ति दिया करे Bhagwan will प्रेम धन give राखें bhakti and mukti and then भगवान उसी सहज में प्रेम धन derail us from the इस path of संसार bhakti. की वस्तु वस्तु मुक्ति देकर उनको Bhagwan, वंचना करते Bhagwan is not very readily giving bhakti. He gives all this material जब आपके रहे केवल एक ही जो नहीं और कुछ नहीं चाहिए until your desire is fixed that you only want Krishna prem and nothing else. Otherwise, Bhagwan will not give so easily. So first he will give all the other material. प्रेम धन क्यों नहीं देते भगवान से Why prem dhan is not given by Bhagwan? Because Bhagwan thinks that by he's going to control, the bhaktas can control Bhagwan by if they get bhakti, pure bhakti. When they get prem, they can control Bhagwan. That's why Bhagwan doesn't want to be controlled. That's why he avoids giving prem bhakti. Like Mahasada was tying Bhagwan. How did she tie Bhagwan? She tied Bhagwan with prem rupi rope. Vasalya prem rope. She tied Bhagwan. भगवान क्या चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ Bhagwan, what does Bhagwan want? Bhagwan wants to be free, independent. But what a bhakta can do is to tie Bhagwan. So sometimes the mothers, they keep a rope around the kids, so that when the kids don't get run away from here and there, so they tie a rope around their belly, so to control the kids. They similarly. So until the sadhak has this bhakti mukti desires in his heart, Sudha bhakti will not appear. भक्ति मुक्ति आदि पंचा यदि मने होय साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना होय. So until the bhakti and mukti desires are in our heart, prema bhakti will not appear in the heart. जब तक साधक के हृदय में रहे तब तक शुद्ध भक्ति कैसे नहीं. Until the desire of this bhakti and mukti is in the heart, Sudha bhakti cannot appear in the heart. Re-emphasizing this point. What do you want? Do you want bhakti mukti or do you want prem? If you want prem, then you have to leave the other bhakti and mukti. So for prem, you have to give everything. भगवान भी उसी प्रकार करते हैं. भक्तों को क्या करते हैं? भक्ति मुक्ति आज्ञा के विषय वंचना कर दिया. भक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन रखन. भगवान पे जल्दी प्रेम नहीं चाहिए. So Bhagwan is not giving prem so easily. So he'll give you everything material in this world. Gurudev used to give example. One devotee, female devotee, she made some prasadam for her husband, and early morning she made prasadam for the husband before he goes to the work. Then so she has to cook for the husband, but the baby wakes up the early morning.
यहाँ लहसुन है, होटल तो मिलता नहीं, आजकल सब होटल भी यूज करते हैं, यहाँ लहसुन भी शाकाहारी है कि नहीं, बोलते इंडिया में बोलते, बोले क्या नहीं, बंगाल में तो और भी बोलते हैं, बोले मछली भी क्या गंगा फल, गंगा में रहते नहीं, गंगा फल it's very very easily, very all the, so it's very difficult to get pure food outside, so it needs to be cooked at home. So the lady who is cooking for her husband, she's cooking early in the morning, 4 o'clock in the morning. She's trying, when the baby also wakes. So what she does? तो क्या करते हैं देखो, वो माँ क्या करती है, बच्चा के जल डोली दे देती है. So what does the mom does? She gives some sort of lolly in the mouth of the baby. आजकल क्या देता है, आर्टिफिशियल वो Dummy. प्लास्टिक बना देते हैं, बना देता है वो चीज़. And the dummy is in the mouth of the baby because he needs to cook. बच्चा सोचता है कि मैं माँ की स्तनपान कर रहा हूँ. The baby thinks I am having something to suck on. दूध तो नहीं आ रहे. और इतने समय माँ क्या क्या What does the mother do? While the baby is engaged with and busy with the dummy, and then she will quickly do the routine and do the cook the prasad for the husband. कुछ समय के बाद उसको पता चला ये इसमें कुछ नहीं आ रहा है, भूख लग गई. So this baby is now sucking on the dummy, but after some time he'll get the baby starts crying a little bit later because he's hungry now. And until he's, then what happens then? Then the mother will pick the baby up. The same way, Bhagwan, when Bhagwan, what he does is he gives us all these lollies and trophies just to keep us occupied in this material world. And until that sadhak starts crying for Bhagwan, and then Bhagwan will not give bhukti and mukti, and then he will give. Similarly, Bhagwan will do just like. So first Bhagwan will give all these material things in this world. Just like the mother is given a lollipop to the baby to keep them happy and engaged. So similarly, Bhagwan will give all the material things from this material world. So the sadhak will be engaged in that. So once the sadhak knows that this everything's available, this material thing is it's dugdai. Dugdai means giving more miseries and giving more distress. All these material things will give us distress. Initially, it will give some pleasure, but later on, the distress will follow. It looks like there is happiness, but but the inside it's all giving distress. So all this material things that you're gonna get, in the end, it will give you a headache. So this will. What is the perpetual source of distress? Whatever you'll get from this material world, it will be is a source of distress. Right at the beginning, it will be like a pleasure, but at the end, it will be dukkha. Means it will be distressed. It will give you problems.
ठीक उसी प्रकार भगवान Same way, कहते हैं, Bhagavan भगवान says, कहें, कृष्ण कहे if अमा you, पदे मागे विषय स्वरूप আমি বিজ্ঞ এই মূর্তি বিষয় কেন দিব Krishna is saying সজ্জনা that মত দিয়া তেরে if somebody বিষয় wants, কেন is भगवान asking कहते for all this. इस संसार के लोग तो जानते रहे कौन से उनकी किसकी किस उनकी लाभदायक Bhagavan है says, कि कभी कभी हानिकारक Bhagavan is saying that the people of है। this world do not know ये जो what संसार is के good for them, what is सम्मान bad for them. So they are asked for काम this से material कृष्ण things क्या from नाम this करो material सर्व world. महिमा देवता गीता में भगवान कहते हैं ये अर्जुन इस So, संसार के जीव काम करते वशीभूत होकर so even in Gita he सर्वस्वी says को बहुमानन करते हैं that to Arjun that the people of this world would क्योंकि ask संसार for की जितनी material जो things. वस्तु जो है सब दुखदायी है That all these things भोक्ता are नहीं जिसके यहाँ जाओ तो are source of distress sooner or later. संसार की भोग की वासना जब तक हमारी अंदर में रहेगी So until तब these तक desires are there, लाभदायक नहीं है we are not qualified to do Krishna Bhakti. इसलिए भगवान भगवान भी कहते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं चलो धन So संपत्ति को Bhagavan also takes वो उसको tests us बहुमानन by giving us a lot of है material जैसे benefits गन्ना of है this world, गन्ना शुगर के just like sugar cane. है वो मीठा लगता It's sweet. है और चिबाने के बाद फिर Then, कुछ नहीं लगता then मीठा after लगना लगता after chewing it, there is when you chew it in the beginning it's इसलिए sweet, भगवान के but भक्त after you've chewed it, उनको ये सब there's nothing शुगर का left at the back. Then you have गन्ना to split it out. So this is what Bhagavan does. और He वो gives चिबाने के us, बाद दांत में जब लग जाते हैं खून निकालते हैं तो वो खाना चाहिए he giving all these material things. Then when you're eating this sugar cane, you chew until there's no rust left in it, and then at the end it will be just like a more जिसके पुत्र नहीं वो बाबा को problem. घर कहते भगवान मुझे पुत्र दे बेटा हुआ तो उनको करने क्या बोलते धुंधुकारी के माध्यम से Like people who don't have ये कारण children, they ask आत्मा Bhagavan के to नाम पर give me one son. कि पुत्र नहीं था चाहिए Just like in Atman, पुत्र हो Brahman गया तो asks क्या for one और son. उसको दे But पिताजी when है पैसा दो पैसा and गलत when, रास्ते में जाके पैसा then खर्च once the son is born, it may not तो पुत्र को necessarily फिर be पैसा दो a bhakta, but can give you more mysteries. कष्टदायक हुआ कि नहीं है लड़का नरक में क्या बोले शराब पीने वाले हैं If the sons are दुष्कर्म not, करने वाले फायदा कुछ नहीं they drink and they're just enjoying पुत्र नहीं हो themselves. उसको तो नहीं So they'll only give misery to the parents. है लोग सोचते हैं पुत्र होने से सुख होगा किंतु अंत में People think that they have दुख है the son, then it will संसार में जितनी वस्तु will give us more pleasure, but इसको हम जब तक it अनुभव नहीं they could करेंगे also give more तब तक हम भक्ति करने के miseries. अधिकार ही नहीं है। So until we परीक्षा give up all लोकानुत्तमा these desires, इस संसार we सुखमय cannot है qualify कि to सुखमय है be इसके doing अनुभांति bhakti. पहले First, we have to analyze what is this material world. The नहीं तो सोचो कि desires लड्डू जो खाया वो are पछताया और जो are नहीं खाया वो भी whether they are pleasure giving or are they just temporary pleasure giving, and in the long run giving miseries. या दिल्ली के लड्डू मतलब संसार की अनेक प्रकार की भोग की बात So we like so many vasana. दिल्ली के लड्डू जो खाया वो भी पछताया जो नहीं खाया वो भी समझ में आ रहा है इसलिए उपनिषद में कहे परीक्षा लोकानुत्तमा वाली बात की देखे कि संसार में So Upanishad is दुख saying, है so we have to judge इस that the संसार में सुख है world, this material world सामान्य is it सुख सुख तो है लेकिन सामान्य रूप में very pleasure giving or is distress giving. kind It looks like pleasure giving, but the long run tends into distress. सामान्य सुख के लिए इतना बड़ा दुख यहाँ सिर पर लेकर चलना But for just to get a temporary संसार की pleasure, विपत्ति we take onto our heads
all these. गधा के खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। धोबी के जितने गंदगी कपड़ा So the गधा के ऊपर दे दिया। example is like a donkey. मेरा सारी घर में What does it? उठाने कर We दिया। act like donkeys. We collect. हैं? और फिर उनको साफ सुथरा करके Like walking like donkeys, we get. What does he गधा do? के क्या मिलता है? What does the donkey get when न खाने को the मिला, न washerman takes न him पानी। around? He goes and collects all the dirty clothes everywhere, and, and कुछ नहीं। but he doesn't. The donkey doesn't get any food, but he only has to labor all day. So we are just laboring in this world. Similarly, नहीं, गधा गधा कैसे मूर्ख है? कहते हैं Yes, we- गधा जो है and गर्मी के समय मोटा हो जाता है just और give it. बरसात के समय पतला हो जाता है। गर्मी के समय घास सूख जाता है। Just giving example of the donkey, he's such a fool that in the season of rain season, he actually becomes weak, and then in the dry season he becomes healthy, because in because in the dry season when there is less grass, so he goes out eating grass, and then he looks around and sees there's not many grass left, so he thinks that he has eaten all the grass. So whereas in the winter when there is less grass around, but when in the rain, when the rain comes, there's a lot of grass, so he eats little bit, then his stomach, then he looks around and sees that he hasn't eaten much, because there's so much grass there, so he thinks he hasn't eaten much, so he becomes thin. So, this is how the donkeys are regarded as fools. So what does it mean is that so the karmis are like donkeys, but they're thinking that we haven't. So if they sit down for doing Bhagwan's bhajan, then he'll think that I haven't done anything for my material welfare. भुक्ति मुक्ति स्प्रिया ये दोनों पिशाची की भांति है, और साधक के हृदय में जब तक ये दोनों रहेंगे, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया आदि रहेंगे। So until the sadhak has in his heart bhukti mukti spriya, until then Sudha bhakti will not appear in their heart. So we have to empty our hearts. How does a bansi or a flute plays? Because there is nothing inside the flute. It's empty. Until this, similarly, like the sadhak, until his heart is completely empty from all the other desires, then only he'll be able to play this flute. So how do you take it out? How do we take out all these desires? This dirt is in our heart. How do we get rid of it? It says here,
Sadhan bhakti is the only way. पहले फिर साधन भक्ति पालन करना पड़ेगा। You have to साधन भक्ति follow कहाँ होती है? sadhana श्रद्धा, bhakti, साधुसंग, भजन क्रिया। Shraddha, Sadhu मनोरथ Sangha. बुद्धि निश्चय रुचि आसक्ति तो ये साधन भक्ति कार्य है। These are sadhana bhakti. Until we follow this, then भक्त के साथ बैठ करके until we have to associate with bhaktas, and then listen to katha. आप जब तक कथा श्रवण नहीं करो तो आप हृदय निर्मल नहीं हो। Until you listen to katha, your heart will not become clean. इसलिए करे साधन भक्ति होइते হয় गति उपाय। The sadhana bhakti needs to be followed, and until the state of rati, मान प्रणाम राग होइते राग अनुराग भाव महाभाव सब उदाहरण दिया। so this, and then at that state, साधन भक्ति करते the करते desires will go away gradually. Then the heart becomes softer and साधन clean. भक्ति भाव भक्ति है। Sadhana bhakti. साधन भक्ति के उद्देश्य क्या है? The aim for sadhana bhakti is to cleanse the heart. To clean the heart. भक्ति के दो फंक्शन हैं। The two functions of sadhana bhakti. First is to clean the heart, like a washing machine. To clean all the dirt from the house. मशीन में डाल देते हैं, वो क्या करते हैं? रोलिंग करते रहते हैं, अप डाउन करते हैं। जितने भी गंदे चीज पर फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार साधन भक्ति जन श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक। From sadhana bhakti, shraddha to asakti is called as sadhana bhakti. The process of sadhana bhakti, our heart becomes clean. So the first function of sadhana bhakti is to cleanse our hearts from all other desires from the heart. It's cleansed. We have to make it dilute. And what is the second intention? So Nitya Siddha Bharajavasis. The second object of the sadhana bhakti is how do we obtain the bhav of the Nitya Siddhas. How do we get those bhav from the Nitya Siddhas? So this is the second object of sadhana bhakti, that we need to follow the after sadhana bhakti, bhava bhakti. भाव भक्ति में शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम सृजनसम भाव रुचि विचित स्मार्टन तेजसु भाव उच्चते चित्त निर्मल साधन भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल sadhana bhakti, the heart is clean, and then the platform is ready for bhava bhakti. शुद्ध सत्य विषयात्मा चित्त कैसे निर्मल हो। The heart becomes clean. साधन के द्वारा चित्त निर्मल हो गया। बड़ी बात। आप लिखो तो कुछ अभी याद रहेगा, आप तो भूल जाते हैं, साधन भक्ति के दो फंक्शन हैं। एक चित्त को निर्मल करना, काम क्रोध आदि दूर करना। The first function is to clean the hearts of sadhana bhakti. Kam, krodh, moh, bhakti, mukti, spare, the desires, they needs to be cleaned by sadhana bhakti. And the second function, Nitya Siddha Parikars, we have to the Nitya Siddhas. रागात्मिक जन हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? साधक। नित्य सिद्धा कौन है वही? नित्य सिद्धा कौन है?
नित्य सिद्ध परिकर जो कृष्ण के नित्य परिकर है, जैसे राधा ललिता the विशाखा, Nitya ये Parikar of सब कृष्ण के Krishna. क्या है? Nitya नित्य Parikar. परिकर है। अभी तो रागात्मिक जन समझ में नहीं आएगा, रागात्मिक राग जिसके हित में सारी, वो लोग रागात्मिक जन है, बात तो सही है, किंतु अभी नीचे के बात सुनो तब तो ऊपर के बात सुनो, ऊपर के सुन करके बोलने से नहीं होता। अभी राधा आदि गोपियों की नंद यशोदा आदि The इनके हृदय Nitya में जो प्रेम रूपी सूर्य के क्षीरण कर्ण, वो हमें कैसे करते? ये कृति सदा नित्य सिद्ध स्वभाव, Nitya Siddhas that have their but desires in their heart. How do we get it? Those desires. This is वो भाव अभी हमें कैसे करते? how do we get that bhav? वो So, भाव so की there's प्राप्ति करने के desire. लिए ये साधन करना Sadhana is done to क्या करें? get that चित्त का bhav. निर्मल करना है। प्रसाद खाने के लिए थाली ठीक Then the desires will come to obtain that bhav of Nitya Siddha. बर्तन साफ करना, So first is when the cleansing of the heart. The second is that the desires will come into the heart to follow they get the bhav of Nitya Siddhas. ये निर्मल करने की साधन भक्ति के फर्स्ट फंक्शन है, बर्तन धोना, नहीं देखो है। फिर आकर के फ्रेंड्स साफ जब हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है ना, संधिनी शक्ति आ जाती है, और संधिनी के ऊपर क्या पड़ता है उसमें? Clean, heart is clean, then Sangati Sakti comes in the heart. तब उसमें चित्त अत्यंत कमलित हो जाता है, Then the heart becomes completely clean and nirmal, ready to accept the bhavs of Nitya Siddha. मिश्र सत्य किसको कहा जाता है, इसे समस्त जानना पड़ेगा, तब तो बहुत है, सिर घूमता रहेगा। सत्य किसको कहा जाता है, विशुद्ध सत्य किसको कहा जाता है, मिश्र सत्य किसको कहा जाता है, ये सब एक एक करके शुक्ला से विचार करना पड़ेगा। पहले एक कथा बोलो, साधारण रूप में एक कथा बोलो, चित्त को क्या करना पड़ेगा? निर्मल। और निर्मल चित्त में क्या प्रतिफलित होगा? भाव। पहले क्या आएगा? भाव, नित्य सिद्ध। संधि नहीं आएगा, प्लेटफॉर्म बनेगा, और फिर संगीत और राग ठाकुर जी के बैठने के लिए there will be a platform created once the heart is clean to Sandhini Sakti. Will clean, will be platform made. Our heart will be clean, and then so the Thakurji needs to sit into our heart, and the heart is clean, and then our heart will has to be clean, and then only this Bhagwan Govinda will come and sit in. That similarly, with sadhana, we have to clean our chitta. Once the chitta is cleaned, first will be bhav of the Nitya Siddha will come into this. Suddha Satta will come. शुद्ध सत्व है क्या? शुद्ध सत्व को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। शुद्ध सत्व क्या है? पहले सत्य किसको कहा जाता है? What is सत्य? सात्विक भाव से जो क्रिया आदि जिसको कहते हैं सात्विक कहा जाता है। The actions are done by the Sattvic. Those are called Suddha. There is no काम क्रोध मोह. All the actions done after. फिर सत्व की और एक विश्लेषण कर रहे हैं क्या? कोई अर्थ होता है
कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा आक्रांत चित्त के कार्य शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त का है। कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा चित्त आक्रांत होनी चाहिए। क्या बोला, समझ में नहीं आया? कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा जो भी आप चिंतन करोगे, whatever you're meditating, Krishna, it has to be Krishna. The subject has to be Krishna. When the heart is clean, whatever you are meditating, it has to be regarding Krishna. Affected. Affected. Heart will be affected with Krishna. To be कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा आक्रांत चित्त ये कहा जाता है सत्य। जो सत्य बोले वो याद, कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा आक्रांत चित्त जो होता है, इफेक्टेड जो चित्त होता है, उसी की कहा जाता है। ये बहुत कुछ आपको याद रखना पड़ेगा ना। हम तो बोल रहे, आप सुन रहे, इस कान से सुना, उस कान से निकाल। You have to read and then understand so many types of satya. Sattvic bhav first, then Shuddha Sattva. So we काम क्रोध आदि होने पर उसके राजसिक का ये क्या बोले, तामसिक कहा जाता है। if calm crowd, it becomes rajasic. अहंकार आदि के द्वारा जो क्रिया आदि कहा जाता है राजसिक हो जाता है। Ahankar, pride, it's called rajasic. दीनहीन आदि के द्वारा जो क्रिया आदि होता है, Deenhin means denial, is called is satya. Shuddha Sattva. और कोई सात्विक भाव रखने सत्य से जो दया पवित्रता हम कहते हैं सात्विक भाव, सात्विक भोजन खाओ, तामसिक भोजन मत खाओ, राजसिक भोजन मत खाओ, सात्विक। उसी प्रकार पहले सत्य किसको कहा जाता है? Similarly, what is satya? डेफिनेशन क्या होता है? कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा What is defined? उसके पहले हमारे क्या हो गया? चित्त निर्मल हो गया, सब काम। अभी कृष्ण विषय, we have now that the heart is clean, then we have to anything related to Krishna. All meditation without Krishna, the prem will not come. So we need to meditate only on Krishna. The subject has to be Krishna only. Then कृष्ण विषय और कृष्ण छोड़ करके जितने भक्त लोग सब क्या बनता है? आश्रय। so Krishna is Vishaya, he is the object. And who are the other bhaktas? They are the ashray. कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा चित्त आकृति माने आसक्ति। So Krishna, कथा जो बोलेगी आसक्ति में कृष्ण में। so whichever katha you are hearing has to be attracted to Krishna through the katha. फिर शुद्ध सत्य भी कहा जाता है जहाँ पर कोई ये काम भगवान की, जैसे कृष्ण के माता पिता आदि नंद सब शुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित। So all the Nitya Siddhas of Krishna, they are all in the state of Suddha Sattva. भगवान श्री हरि माया की गुण की अतीत का, Bhagavan is above Maya's gun. तो शुद्ध सत्य के द्वारा सब गठित होता है। यहाँ तभी कृष्ण के जितने भी क्रिया आदि माता पिता सब किसमें शुद्ध सत्य। Everybody related to Krishna is in Suddha यहाँ Sattva. तो कृष्ण के वसन भूषण सब शुद्ध All, everything related to Krishna is in Suddha Sattva. ये साधन भक्ति, भाव भक्ति या प्रेम भक्ति, साधन भक्ति के दो फंक्शन बताया। Sadhan Bhakti is given two functions of Sadhan Bhakti.
हैं? to clean the hearts, नित्य सिद्ध परिकर to की Nitya भाव Siddhas Bhav, Bhavs, to obtain the Bhav of Nitya Siddha. So this is the function of नित्य sadhan सिद्ध का bhakti. भाव तक प्रकट में नहीं सकते, वो भाव को प्रकट करना So we have to create है। that समझ रहे bhav हो? in our heart. कि तो उसको It's in प्रकट our करना heart, but we have to है। जैसे unwrap कि it. हमारे पास भी है तो फिर उनके पास जाना चाहिए। उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार So if we have आग it in our सर्वत्र heart, है, but why do we have to go लाकड़ी to में आग others है, to get it? किंतु The example is given. Fire is everywhere. So even fire is in the wood. आग को फिर But but लेकर के how, लकड़ी में लगाने पर लकड़ी but the जलती fire is in the wood. But how do we है। आग light के the अंदर भी wood? We लकड़ी आग है, need किंतु वो to आग लकड़ी को जलाने है, बाहर से आग need आग to लेकर के bring वो the आग लकड़ी को fire from outside लकड़ी को and give जला it to the आग wood. Then the wood जल will जाएगी। burn. Similarly, we have this bhav क्योंकि within us. साधक में जो है प्रेम जो है मुझे बताइए, वो उनका क्षीण रूप में This is prem is there in the heart, but it's in a very minute form. है। So we need to get it तब तो ही from संग के those फलस्वरूप those devotees वो who धीरे have धीरे this प्रतिफलित होगा, bhavs lighted up. परिवर्तित होगा, So we क्या have to get it from them. इसलिए प्रेम भक्ति भक्ति कहा जाता है क्या, Bhav. एक दूसरे को संचारित हो जाए। So this is how आपके हृदय it's जिसके हृदय transferred. में जो प्रेम है This वो प्रेम बहुत who has the उसको prem. प्रकट जीवन है, इसको सिद्ध करे प्रेम बहुत Prem, we प्रकट have होता है। prem in our heart, but it's a सर्वनाम very सिद्ध minute जिसके form. भाव उदार So उदार from the तुम्हारे पास person है who वो has bhav, वो पोटेंशियल रूप में, इसलिए संत we, महात्मा संघ प्रवेश we कोई that's why पवित्र we हुआ by उसके keeping वो वृहद रूप धारण करता sangha with Sant है। Mahatmas, then with those जैसे मैं उदाहरण दूं, bhav रामानुजाचार्य जी उदाहरण will manifest. बोले जैसे आग सर्वत्र रहने पर भी है, जैसे लकड़ी में आग है नहीं, The example was given like the क्योंकि आग नहीं fire जलती, is there in the wood, बाहर से आग ला but करके हम when you जला put देंगे, fire from outside and put it on the wood, then it will burn. Similarly, we have उसी the प्रकार प्रेम bhav bhakti in our heart, but in a very minute form. जिसे कहा जाता है So शुद्ध need भक्ति जिसे कहा जाता after है, after the heart is clean, then only will this इसलिए शुद्ध संस्कार bhavs और can विषयात्मा be प्रेम सज्जन समूह को come to our heart from those nitya siddhas who have this bhav and enlighten our hearts. कथा सुनी उसके बाद बड़ा आनंद आता है, आनंद आता है। अभी कथा में आनंद नहीं आ रहा है, क्यों आनंद नहीं आ रहा है? Then why are we not enjoying katha now? Because our heart is not on the Suddha Sattva platform. The more we are in Suddha Sattva platform, then we'll listen to the Kari Katha, and, and he will release the Katha more and more. So if somebody is in Vatsalya Ras, and they'll enjoy all the Katha of Vatsalya Ras. Similarly, those who are in Madhurya Ras, they'll enjoy the Ras Leela Katha of Krishna. फिर गोपियां किस प्रकार कृष्ण में प्रकट होने लगी, गोपी जी फिर कृष्ण गोपियों के सम्मुख में प्रकट हुए, तासांग अभिविशो स्मरण तात्पर्य क्या, चित्त जितने निर्मल So what's the reasoning? उच्च स्तर की कथा As our hearts are clean, then the higher level of चित्त जितने निर्मल नहीं हो रहे हैं, Katha will enjoy and will understand. हनुमान जी की कथा, So if the heart's not clean yet, then the basic kathas needs to be told. पहले तो हमारी
First, we have to clean the Maya Moha which is within our hearts. What katha we need to understand first? Chitrakuti Maharaj katha example. चित्रवती महाराज कथा जानती कोई Right. चित्रगुप्त महाराज है ना जिसके अनेकों रानियां थी सब प्रकार की भोग संपत्ति था किंतु उनके पास एक पुत्र नहीं We're listening to Katha like Chitrakuta Maharaj, and he had so many wives, but never had any kid. So, for the mercy of a sadhu, he got one son, but what happened? So one queen, the eldest queen, got a baby. So the other queens got jealous. And because the elder queen has got the son, so the king goes to the big when the other queens got jealous and they what so what they did is they poisoned the kid. The kids, the son dies. Chitrakuta Maharaj and then the queen, they start crying. Then Narad, the Angira Rishi came and then explained. So he could recall the soul of the baby, and they said, ask the soul that why are you giving so much problem to your parents. The baby the baby then gives the Harikatha to the king and the queen, that who is my parents. I have taken so many births and there's so many times. Like Abhimanyu, when he was skilled in the battlefield in Mahabharata. The Arjun also started crying. Bhagwan Krishna said, I'll show you your... So Krishna took Arjun to the heavenly planet. So in this, Krishna took Arjun to heavenly planet and showed that Abhimanyu was playing there. So Bhagwan called Abhimanyu. So when Abhimanyu saw Arjun, and then he says that who is this my father? I was only there temporary. Nobody is anybody's son. This is only a temporary relationship. I was there only for certain time. So I just came to my debts, just to repay my debts. It sounds bad when we are here. Whatever we are doing, we are just trying to repay our debts to this society and to our parents and others. Everybody has come here to pay the debts. If you say son, daughter,
जो पूर्व जन्म में जो जैसे in past life है what ना, देखो has आज happened, पुत्र के रूप में they will come in जिंदगी this भर life for you to pay the है debts. इसलिए वो कथा सुनाते हैं ना, That's दो why मित्र एक साथ में जा that रहे थे, there is a story. ट्रेन की टिकट Two मिल गई, friends are going. पचास They हजार got हजार the ले लिया। lottery, ये एक मित्र 50,000, बोले 50,000 each one. है, One friend is saying, ये इनसे इनको मार करके I will मैं पूरा पैसा ले लूंगा। kill one friend and take all the money. एक होटल में भड़ा करके Then रहते they were थे। staying in one hotel, renting दूसरे there. मित्र ने क्या कि Then the what the बाजार में other गए, friend did, दूध लेकर गया, दूसरे मिल brought में brought जहर डाल one दिया friend और went to मित्र को the खिला दिया, shops, मित्र मर brought गया milk, put poison है, and killed और his उसे friend and पूरा took पैसा away ले all the money. 50,000 अपना था, Or और 50,000 50,000 was his own and मित्र के पास 50,000 था। was his friend's. So he took all the समझ में आ money, रहे, killed his friend. Then और इधर लोग प्रचार कर दिया इसके then फूड पॉइजन हुआ, then everywhere he told that है, his friend died because of food poisoning. और उन्होंने कि लोग दिखाने के लिए But अपने मित्रों के परिवार what को 10,000 रुपए he दिए, gave 10,000 to his friend's है, family. तो कितना हुआ, Then what happened? 40,000 रुपया Eh, मिला, eh, He अपना got 50,000 his own और मित्र के 50,000 and friends 40,000. तो कितना हुआ, So he got 90,000. 90,000। वो 90,000 रुपया So द्वारा वो क्या करना, बिजनेस शुरू what करना, he started a business with this है, 90,000. और देखते देखते And वो then अल्प दिन में in एक साल little 5 time, साल में in उसकी 2 years, बिजनेस खूब कर गया, 5 years, his business आकाश में flourished पहुंचने लगा, a lot. है, इतना बड़ा बिजनेस His हुआ, business became very है, big. करोड़पति, है, He became millionaire. करोड़पति और आगे क्या बोलते हैं, Millionaire. मिलियन ट्रिलियन बन गया, है, सभी को भाई Then हमारे everybody is भाई saying, इतने in जल्दी very कैसे short पैसा time, कमा लिया, how did he get पता this नहीं, money? Nobody is है, understanding. ऐसे करते करते And मानो then 15-20 साल में then after 15, 20 years, बहुत फैक्ट्री हो गया, he's got बहुत a धन lot of संपत्ति, factories है, and lot of money. बेटा भी बच्चे His बड़े हो son गए, also became बेटा की शादी करना था, adult, शादी के लिए तैयारी शुरू and कर दिया, he है, और क्या कहते हैं आगे बढ़े, arranged marriage of his son. सगाई भी हो गया, And जो then फॉर्मेलिटी रह गया they विवाह, did some sagai, विवाह के दिन which is तक भी हो गया, and विवाह होने वाला था, they were कितना organized लोग a बेटा के day पेट में for दर्द होने लगा, marriage. Then before her marriage, डॉक्टर दिखाया, his son got डॉक्टर some कोई इलाज नहीं कर रही थी, some pain फिर in the उसको दुबई stomach. ले गए, ये सत्य Then घटना, this is a true story, दुबई ले गए, बड़े and they शहर, अच्छा जो कीमती अस्पताल the में his son भर्ती करा, to Dubai. करोड़पति है ना, Is a very है, best hospital in Dubai. He has got a lot वहीं of पर money. He's millionaire. वहीं पर So they are ट्रीटमेंट लिए, 1 month they डॉक्टर did भी खुश treatments, but doctors है, couldn't do much. कर देते, डॉक्टर पता नहीं, Doctors couldn't ऐसे करके understand सारे what's पैसा को happening, जितने भी बिजनेस and में just जितना like पैसा that, था ना, whatever business सब उसने money he बेटा had के सेवा में through लगा दिया, business, he had used up है, his money in treating his है, son, बिल्कुल सारे बिजनेस and सारे पैसा all the money was used जो up भाई को in दिया जो treating the son. है, करोड़ रुपया खर्च किया, कितने करोड़ रुपया Millions of खर्च किया, dollars he used up डॉक्टर उसको बोले in the treatment, and the ये doctors in the end said, अपने देश में ले जाइए, बोले take ले to जाओ, your country in अच्छा दिन बाद India, में and उसने after a very short time he is going to die. उसके कुछ नहीं है, Then बस they couldn't do डॉक्टर anything. अभी तक भी उसके कुछ The किसी प्रकार के रोग the doctors couldn't निर्णय नहीं diagnose कर डायग्नोसिस कर नहीं पाए what कि किस कारण से उनके sickness he had. शरीर में कष्ट है, कितने दवा दी, ये दवाई वो दवाई, All the ये different ट्रीटमेंट वो medication ट्रीटमेंट, they did, ये टेस्ट वो टेस्ट करते करते so many फिर tests, so उसको many ट्रीटमेंट चालू treatments, करते but nothing could be done, हैं, बिल्कुल वो पेनीलेस हो गए, and he या तो became उनके पास पैसा नहीं है paralyzed, अपने बेटा को वापिस ले आने, and he doesn't even have money to bring और वो चिंता करते his रहते, son back to India. And डॉक्टर he ने is कहा क्या, thinking, बोले इसको doctors have said, रिलीज कर दो, take हैं, him to हॉस्पिटल से uh, निकाल इसको ले जाओ अपने देश में, take him to your बेचारा country. So उसी this दिन man, वही the father, बेटा के he was पास बैठ गया, he was sat आधी रात में बेटा खड़े हो गया, near his son, and in the midnight पहले this बेटा को son पहले मैं stood ठीक हो up. गया, He said, फिर the पिता को son stood up, आनंद, said, I have become
I'm good now. I have spent all my money. And then the son said, "Oh father, I am going." So father is saying, "Oh, where are you going?" Son said, "I am going where I came from." So do you remember? This son is saying, 20 years ago, you and your friend won in the lottery 50,000, 50,000, and you killed your friend and took away all the money from him, 50,000, and you had 100,000. Then you gave 10,000 to your friend's family. So all this story, the son is telling his father, and with this 90,000 you started the business, and today now you're millionaire. Oh father, that so there was one said he was giving money to whoever was asking him. So he made a rule that whoever comes and whoever is asking money to this Shetji, he is giving money. So Shetji said, "Go to my accountant, fill up one form there." And in the form it is written that you have to, I am giving you this money, and you will have to return this money in this lifetime somehow. And in there is, and then there is another statement that if you can't give in this lifetime, then you'll have to give in the next lifetime. So so the person who wants to return the money will say that I will give in this lifetime. So the one who is no intention of giving it back will sign the other form which says that I will return in the next lifetime. So one time a dust person came and he said, "Give me some money for my family." Shetji said, "Oh, okay, you have to fill up this form that you will give the life in this lifetime or you'll give it in next lifetime." So he's saying he chose the form to give in the next lifetime. So when he opened the his safe, so this person saw that there was a lot of money, and he's thinking that I'm going to come and steal all this money from this set. So he went away, and he came again in the night time. So and tabela. So he came to this place where all the animals are staying. So, and he was waiting that when it is night time, then I will go into the house of this Shetji and break his safe and take away all the money that is stored in the safe. So he was staying in the middle of all the cows, and and he also understood the language of the cows or the other animals. So one cow is saying to another cow, "Where have you come?" They say, "I came from this village." This village. So why have you taken birth of a cow? That these cows are talking to each other. That in the past life I had taken money from this Setji, and I had said that I will give it in another lifetime, but I didn't give. So I've taken birth in this lifetime as a cow, and I'm giving my milk to this Shetji, and he is
इसका मतलब अगले जन्म में मुझे he is, and I'm repaying my debt. गाय भैंस जन्म लेना पड़ेगा जब जीवित करना है। So that person who is listening there understood that I'll have to take birth as a cow to किसी से कोई give, किसी प्रकार की to काना repay my खोल money. दिया So that's why उसके then ब्याज he समेत ran away from तो there. So if you have taken चुकाना anything पड़ेगा। in this life कुत्ते होकर from के हो, anybody, you'll have गाय to होकर के हो, repay with गधे होकर के interest. हो, You'll have to है? take birth as a cow or as a donkey or as a मुफ्त dog में कोई and चीज repay. मिलता There नहीं is है। nothing which is मुफ्त में free एक ही in चीज this मिलता है, life. हरिनाम। There is only one thing that is free, which is Harinam. हरिनाम हरि कथा मुफ्त में Harinam मिलता है, and Harikatha, you receive that फ्री में free. मिलता है। There तो is वो कोई लेना nothing नहीं else है, which is free in this world. है? इसलिए कहते हैं मुफ्त That's में जो चीज why मिलता है ना, उसकी कदर नहीं you don't value what है। you receive in free. मुफ्त में हरि कथा Whatever मिलता है, you receive उसको Harikatha कोई in लेना नहीं free, चाहता। but nobody wants ऐसा to भी है take महाराज, it. देखो किसी किसी को So बेमतलब की जेल हो जाता है, somebody is किसी asking किसी को question. बेमतलब If का जेल हो somebody जाता है, is 30 goes to साल jail 40 साल, तब पता without चलता है कि वो any निर्दोष reason, 30 वो years, पिछले जन्म 40 years, कहीं ना कहीं किसी न but किसी ने की वो रहा, they haven't, पिछले they जन्म are में करके बच गया nirdosh, वो। means they are not किसी न at किसी fault. प्रकार से वो है वो, So और somehow, नहीं हो तो अगले जन्म में उसको देना पड़ेगा, somehow है? something has यदि वो happened. निर्दोषी हो गया, But if he जिन्होंने is, जो 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 दिया है ना, उसका if उसको he, if भोगना he पड़ेगा, is उसको not जेल में at उसको fault, ये then the बनेगा, person और वो ये जज बनेगा, और वो who has given the judgment will have है? to जैसे कोर्ट में दिखाते हैं ना, जज go पैसा ले through, लेते हैं, क्या बोलते हैं, uh, ब्राइब ले लेते हैं, will have to किसी be को in जेल jail भेज देते हैं। वो जज अगले if the नेक्स्ट लाइफ judgment में is not वो जज क्या correct. बनेगा? In the next life, ये जो व्यक्ति जो निर्दोषी व्यक्ति जो जेल में है वो जज बनेगा, और ये बनेगा ये दोषी वो बनेगा। दोषी बनेगा। यही तो कर्म चक्र है। this is the karma chakra of the कर्म karma. चक्र कुछ नहीं है, वही Karma पैसा chakra is nothing else है। but this. यदि को हम तो निर्दोषी है, हमारे कोई दोष नहीं, If we दो are, प्रकार की शादी, there, पूरे there are जन्म में two किसी ने types किया था of, उसको भोगना पड़ता there है। are two types of अगर यदि आप thoughts. निर्दोषी को नहीं, मैंने पूरे जन्म If कोई you have done तो ये something in जन्म the उसको past भोगेगा, life, वो then you have है to suffer वो in this जज life. बनेगा, और If ये you व्यक्ति haven't done anything, then you will, then the judge who is putting you आगे will suffer. वही जितने जितने देखो लॉयर, डॉक्टर, जज, इन लोग के ज्यादा जन्म जन्म इनके भोगना पड़ता है, ये लोग सब वही सकता है, यही लोग ज्यादा नरक में रहते हैं। यही लोग जो है सब नरक भोगना पड़ता है इनको। ये निर्दोषी के यदि सब जज के नहीं कर रहे, सब लोग ज्यादातर ये सब लोग करते हैं, पैसे के लालच में लग जाता है ना, करोड़ रुपया देते हैं, उसके क्या जाता है, बोले कलम तो ठुकना है, जज जानते हैं ये व्यक्ति निर्दोषी है, उसके मिल रहे हैं करोड़ रुपया मिल रहे हैं, तो कलम में लिखना है। मेरे विचार से वो तो जज लिखते हैं, मेरे विचार से ये दोषी है, किंतु उस दोषी नहीं है, इसको भुगतना पड़ता है। इसे भुगतना पड़ेगा। हम लोग इसमें जितने वकील हैं, जितने जज हैं, डॉक्टर हैं,